माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. There are two amendments by Dr. John Brittas and Dr. V. Shivdasan for reference of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Sir, I move the amendment. न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समझ। तो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। On December 11th, the Supreme Court gave its verdict on Article 370, upholding the centre's decision to abrogate it and the reorganization of Ladakh as a union territory. It directed the central government to conduct elections in Jammu and Kashmir by September 30, 2024, while emphasizing the swift restoration of statehood. The court declined to rule on the validity of the presidential rule imposed in Jammu and Kashmir in December 2018, citing that it was not explicitly contested by the petitioners. But what do Kashmiris have to say about it? How has their life been affected in these 4 years? Will the government change help Kashmiris? Najeesh Masoodi, a Kashmiri businessman, shares with us the opinion of Kashmiris regarding the Supreme Court's Article 370 verdict. जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया तो वो पीरियड तो पता ही था हमारे लिए, बहुत वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर 1, 2, 3 मंथ्स। तो उसके बाद अब तो मेरे अंदाज से कि आदत हो गई थी कश्मीरियों को, ये जो एक ये अपहोल्ड करने का था, ये देयर वाज नो what should I say, there was no stay on this scrapping of the Article 370। तो इसको अपहोल्ड करना is one and the same thing, 4 साल से वही चल रहा था वहां पे। तो I don't see any changes इससे कि अब कुछ लोग सोचेंगे हाँ, बट व्हाट कैन हैपन, अब ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स पे है जो कश्मीर वैली में हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कैसे इसको यूज करेंगी कमिंग इलेक्शंस में, वो क्या बोलेंगी लोगों को और लोग क्या सोचते हैं। पर्सनली आई एम नॉट अवेयर कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट मेरे को जहां तक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पता है कि आई थिंक दे वेर ओके विद इट। व्हाई? बिकॉज the thing was of the past now, and I mean they had nothing to do with आज uphold होगा। This time I will give an example. My father didn't know about this thing, that this thing is happening. I only informed him there was a verdict which just came, verdict which upheld the scrapping of Article 370. So I don't think much changes would be seen because developments are taking place and people are busy with that. मुझे तो वही लग रहा है। कश्मीर में अभी you have 2 kinds of people usually, and the major population of Kashmir is an upper middle class people, and in that upper middle class you have 2 kinds of people। एक तो जो बिजनेसमैन है, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब क्या है कि अभी तक यू हैड रिजर्वेशंस फॉर ओनली जम्मू एंड कश्मीर पीपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे। आई थिंक द सेम people may continue for some time, or maybe we will have some more people coming out with minimal people across the country can come and join the services in Jammu and Kashmir। वो हो सकता है। Apart from जो statehood की जो बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला soon,
उसने ये नहीं बोला कि इलेक्शंस पहले होंगे कि स्टेटहुड पहले होगा। उन्होंने इलेक्शंस का तो डेडलाइन दे दिया कि दैट एज ए यूनियन टेरिटरी, बिकॉज इलेक्शंस कैन टेक प्लेस एज अ यूनियन टेरिटरी आल्सो, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू गिव द स्टेटहुड बैक टू द यूनियन टेरिटरी एंड देन कंडक्ट इलेक्शंस कैन हैपन एज अ यूनियन टेरिटरी आल्सो। अब वो मुझे नहीं पता कैसे होगा, वो पहले होगा कि पहले अगर इलेक्शंस होंगे तो वी विल हैव अ गवर्नमेंट, बट एज अ यूनियन टेरिटरी द मेजर पावर्स वुड स्टिल बी विद द सेंटर। नाउ सिंस 4 years, 5 years, the powers are already with the center. The fear which people had over a period of time through their policies, through their media, they have already removed that fear. So usse kya hua hai, we have more people coming to Jammu and Kashmir. Our tourism sector has grown, to be honest. It has actually nothing to do with Article 370. It has the fear which is gone, and that's why more and more people are coming. So I think the economic situation has grown. As for this, the government jobs, this is a tricky affair which may happen. Maybe Kashmiris will not be getting more jobs now if we will have people from across the country coming. The reservations which were there, that might be the case. Since my childhood, I have seen when the insurgency was on its peak. So what had happened? The corruption was also on rise. So Kashmiris suffered because of the state as well as because of the non-state actors. So these governments are not corruption free. They were corrupt. All the governments. I hope कि अब आगे क्या हो कि at least जो नई गवर्नमेंट आए वो समझें कि नहीं, it's time. Let us work together for the development of the state, development of its people. अब करप्शन में कमी आनी चाहिए। वो तो अब देखिए जो पावर में आएगा वो उसी तक है। मगर एक चीज बताऊं, जो अभी ये जो हमारा ये प्रेसिडेंशियल रूल है, इसमें तो करप्शन काफी कम रहा है बिकॉज इनकी पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अदरवाइज ऑब्वियसली मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिशियन हमारे को करप्शन फ्री मिलेगा। वो तो डिफिकल्ट है। अब एटलीस्ट चलिए, दे विल स्टिल डू बेटर फॉर द पीपल, वो हमें देखना है कैसे होगा। वो अब सितंबर के बाद ही पता चलेगा। अब what is happening, some new young people are coming. अब उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है? दे स्पीक ऑफ द डेवलपमेंट। उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है? जब when they will be in power, then only we'll come to know about their true intentions. तब तक तो हम कुछ बोल नहीं सकते। That's the only situation. ये हमें, we have to see post elections what's going to happen. Subscribe to Daily Salar Digital for more such updates.